Okay, so welcome again to the second chapter of strength of materials. In the first chapter, we only discussed about the simple stresses and the types of strains. Okay, and then the different orientation where the stress can act, the types of stresses, the numerical problems involving different materials, the temperature stresses, and so. So now it is the time for going with the next chapter, which is all about the shear force and bending moment acting on a beam. So the very first thing, let me share the PPT with you. Yeah. Okay. So lecture 3, strength of materials, and the topic is shear force and bending moment diagrams. Now very first thing, we need to understand some terminologies which we'll be using in this particular chapter, that is shear force and bending moment diagram. So what do you mean by shear force and what do you mean by BMD? Or before that, before going for shear force and BMD, let us first understand what is a beam. What is a beam? Can anybody tell me what is a beam? Yes. So it is a type of support structure. It is a type of support structure. Okay, partially correct. Anyone else? So, beam having a I-shaped structure Yes. for supporting. Yes. Who is this? It is a Sir, horizontal Rohit, structure. maybe roll number Yes. 2. Go ahead. Sir, it having a I-shaped structure for taking a load into the top and the end. Okay. Again, partially correct. Yeah. The beam basically, okay, I will come back to that same point. The beam is nothing but horizontal supporting members. Now, we know that in construction we have two types of supporting members, vertical and horizontal. The vertical are majorly called as columns and the horizontal supporting members are called as beams. Okay, understanding it? So we'll be making sure, first of all, we'll be discussing about beams, and then later in the center of materials we'll go to discuss about the chapters. Okay. Good. So what is a beam? So as I explained you, there are two types of support structures, either vertical and horizontal. Okay, the vertical support structures are called as columns. Okay, so we can write this way: the support structures. The support structures, they involve two types of members. One is vertical and other one is horizontal. Vertical are called as columns and horizontal are called as beams. Okay, so now we are discussing about horizontal support structures. On that horizontal support structure, there can be different type of loads which we have already discussed in chapter 1. The load can be either a point load, it can be a UDL, it can be a UVL, or it can be any random variable uniform varying load, or it can be varying load only. Okay, so how to deal about those forces and how to draw the variation of shear force and the bending moment diagram. So these are the nothing but we need to understand. So shear force and bending moment. Now, what is a shear force? As a definition, if I study, it is sum of vertical forces. Shear force means the force which will cause a shearing action. And as I told you, okay, if this is my beam, let's say if I am having a beam which is horizontal and it is supported at two members, let's say it is supported at these two ends. Okay, this is a beam which is supported at end A and end B. Okay, so ये beam को shearing action means the load should be tangential to the cross section of the beam. As you can see, the cross section of the beam is somewhere here, right? Cross section beam का इधर है. अगर मैं इसको 3 dimension में draw करूँगा तो it will be like this. This is the cross section. So all the vertical forces are going to create some shearing action on the cross section. Because at this cross section, अगर मैं यहाँ पे imaginary cross section लेता हूँ ये particular चीज का, तो ये cross section के लिए this force is a tangential force, right? Tangential force on this cross section. It is perpendicular to the length of the beam, but it is tangential to the cross section, and that tangential force is also known as a shear force. Okay, is also known as the shear force.
Now, what is the shear force at any particular section? There can be multiple loads on acting on a simple beam. There can be multiple vertical loads. There can be multiple horizontal loads as well. But horizontal loads will not contribute to shear force. Only the vertical loads are going to contribute to shear force. Because horizontal load, अगर ये particular beam पे कोई horizontal axial force है, so these axial force are going to cause some elongation, not the shearing action. So therefore, we are very specific about shear forces. They should be vertical to acting on the beam, and we will take the summation of on either side of the section. For example, let's take another example. Okay, so now again I am having the another example. Let's say this is A, this is B. Okay, I have forces like this. This is, let's say, 10 kilonewton here. I have forces like this, 10 kilonewton here. Okay, and we have the beam is simply supported. Now beam is simply supported means there will be some reaction, vertical reaction at A, and there will be some vertical reaction at B. I hope all of you know how to find out the vertical reactions. अगर मैं ये सब equal रखता हूँ, let's say if I keep this as 2 meter, 2 meter, 2 meter. Okay. Okay. So, yeah. So we have VA, VB, and this is a particular case we have taken a beam on which there are loads. Now all of you can easily figure out ki what will be the reaction at A and reaction at B. ये symmetric है अगर है तो reaction at A and reaction at B will be half of it. It will be 15 kilonewton here, and everybody knows how to calculate this reaction. We have been studying this in engineering mechanics also. You must have studied. Okay, so we know these reactions. The very first thing in shear force and this kind of problems, we have to figure out what are the support reactions, and I hope everybody knows how to get the support reactions. Okay, so VA and VB we have easily calculated, so symmetrical one. Now suppose if there are, let's say if I take this point C, point D and point E, there are 3 points. Now if I want to find out the shear force at C, at point C, the shear force. तो shear force अगर यहाँ पे देखते हो तुम, अगर this particular beam has got multiple cross sections, cross section uniform है, but अलग अलग जगह पे मैं cross section पे shear force का value check कर सकता हूँ. For example, if I take my imaginary section over here, अगर मैं यहाँ पे section लेता हूँ, section 1-1, तो section 1-1 अगर मैंने लिया तो section 1-1 पे shear force कितना होगा? तो what is that shear force? तो ये इसका meaning है. The shear force is nothing but summation of vertical forces on either side. You can take summation on this side, or you can take summation on the other side. Summation on either side of the section. So shear force at this particular section, how will I find out? I can write down the shear force at section 1-1. At section 1-1 can be equal to summation. Now summation करते वक्त मुझे sign convention लेना पड़ेगा, as you know. So shear force के लिए the sign convention is what? Suppose if I have this particular section on the left hand side section and the right hand side, I can take the summation of the forces on left side of the section or on the right hand side of the section. If I take on the left hand side of the section, then upward forces I'll be treating as positive, and of course the downward forces I'll be treating as negative. But if you go on adding the summations on the right hand side, you have to reverse the sign convention. That sign convention on the right hand side should be downward positive and the upward negative. Okay. Okay, so left hand side and right hand side, you understood the sign convention. This is important. We will be frequently using this in our calculations. Okay, so here if I want to find out shear force at section 1-1, so you can take section 1-1 के left hand side पे या फिर right hand side पे, कोई भी एक side का मैं summation ले सकता हूँ.
ठीक है. If I go on left hand side vertically upward है, देखो एक ही force है VA. So and that VA is how much? It is 15 kilonewton. So I will take this as 15 kilonewton and positive because I know the sign convention vertically positive. But if you check on the right hand side and if you do this way, right hand side से भी अगर मैंने calculation किया तो right hand side में क्या है? Downward positive होता है. तो this 10 would be positive, this 10 positive, this 10 positive and this 15 negative. So 10 plus 10 plus 10 and minus 15. It will give me again positive 15 as the answer. Are you understanding it? So if you, even if you work on any left hand side, right hand side, you're going to get the same shear force at any cross section, Okay, understood this. But now for example, if I take the cross section somewhere here, cross section 22, section 22, at this section 22, if I want to find out the shear force at section 22, then it will be what? Again the summation on left hand side and right hand side. So what is summation on left hand side? 15 minus 10. Yeah. 15 minus 10. Yeah, 15 minus 10 because 15 is positive, upward है minus 10. If I go, it will be only 5 kilonewton. And if the same thing if you do on the right hand side से भी करोगे तो भी वही आएगा. तो मतलब हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ टाइप का बीम है, so your shear force at different cross section is going to be different throughout the length of the beam, right? जितना भी बीम का length है, the shear force value is going to change, is going to vary. So that variation when I plot across the length of the beam, that diagram we call shear force diagram. Understood? What do you mean by shear force diagram? The shear force diagram is nothing but, so I will write down here, the SFD, shear force diagram, is nothing but variation of shear force value at a given section with respect to the length of the beam. Okay, with respect to the length of beam. तो मतलब जो लेंथ है स्पैन ऑफ द बीम वी कैन कॉल इट एज, लेंथ को हम लोग स्पैन भी बोलते हैं. तो पूरा जो स्पैन है बीम का, उसके यहाँ पे वेरिएशन कैसे हो रहा है शेयर फोर्स का. यस रोहित सोनी समथिंग हाउ द वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस. So according to that we need to draw the graph and that graph will be called as the shear force diagram. And same case with the bending moment. Now how to go about bending moment, let us understand that. Okay. हेलो सर. Yes. सर अगर VA VB की वैल्यूज चेंज करेंगे तो फिर सर हमेशा थोड़ी ना शेयर फोर्स इक्वल मिलेगा दोनों साइड. I am not getting you. सर जैसे कि अगर VA और VB को अपन 10-10 लिखे. ये लिखा मैंने अपने मर्जी से नहीं है, वो उनका वैल्यू है. We have calculated the support reactions. हाँ तो सर हर बार इक्वल है वैसे जरूरी नहीं है ना. नहीं, so will vary, is going to vary, and that is what we are going to do it. ओके सर. Of course, VA VB nothing is constant here. कोई भी 10-10-10 में नहीं रहेगा, कुछ भी रह सकता है. We should be able to calculate for a given particular case. We should be able to draw the SFD BMD and understand it for a given particular case. Nothing is constant, nothing is similar here. Okay, I am just for the simplicity I have taken this particular example. Okay, as we go along this particular chapter, we will be dealing with different kind of variations in this problems. Okay, so now let's go with the bending moment. Now how to calculate bending? So you can see the bending moment ka definition kya hai? The bending moment is sum of the moments. The bending moment is what? It is sum of the moments of the forces on either side of the section. Okay, matlab for example, if I take the section at let's say point DD. Now if I take bending moment ke liye, let me check some different color. Now I want, sorry, beam erase ho gaya. This is my beam. Okay, I want to take the section at this particular location. यहाँ पे मुझे section लेना है point D पे. This is my section 33, and I want to find out the bending moment at section 33. Okay, I write it as BM, bending moment at section 33. क्या आएगा bending moment at section 33? तो bending moment कैसे लेना है? Sum of the moment of forces on either side. मतलब you have to check the summation of moments on either side. Either you work on left hand side or you work on the
राइट हैंड साइड, तुम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करो या फिर राइट हैंड साइड पे वर्क करो, कोई एक ही साइड पे तुम्हें काम करना है. What is happening to this? ओके, अंडरस्टैंडिंग इट. तो हमें एक ही साइड पे कहीं पे काम करना है. तो अभी उसके लिए क्या करें, मुझे साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा. सो लेट अस राइट डाउन द साइन कन्वेंशन. For bending moment. So when you are working for bending moment, and if you have a section, and if you are working on the left hand side section or the right hand side, if you are working on the left hand side section, this kind of moment is positive. This kind of moment is positive. ये moment कौन सा है? तो ये moment clockwise है. See here, clockwise moment is positive. And if you are working on the right hand side, then your anti-clockwise moment is positive. Are you understanding it? These are the sign convention which we follow. Anti-clockwise moment is positive if you are working on right hand side. Clockwise moment is positive if you are working on the left hand side. For example, if this is my beam, ये अगर मेरा beam है and मेरा section बीच में था, ठीक है, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो ये टाइप का फोर्स क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, राइट. ये टाइप का फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देगा. तो ये क्लॉकवाइज मतलब फॉर एग्जांपल इट विल ट्राई टू बेंड द बीम अपवर्ड. तो बीम अगर अपवर्ड बेंड होता है तो ऐसा शेप हमें बनेगा. अगर बीम अपवर्ड बेंड होता है, ठीक है, तो ऐसा शेप बनता है बीम का, राइट. एंड बीम अगर डाउनवर्ड होता है तो ऐसा शेप बनता है. तो ये जो अपवर्ड बीम बेंड अगर होता है तो ऐसा शेप जो बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट. वी कॉल इट एज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट. एंड अगर ऐसा होता है जिसमें ये लोड्स ऐसे एक्ट करते रहेंगे, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट वी ऑलवेज टेक एज पॉजिटिव. एंड अगर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रहा है जहाँ पे लोड, इसके वजह से बीम उल्टा बेंड हो रहा है in the convex shape, this is in a concave shape, this is in a convex shape. If it bends in the convex shape, we call it as hogging bending moment. Okay, and hogging bending moment will be taken as positive if you are working on the right hand side and left hand side पे work कर रहे हैं तो sagging is positive. Left hand side पे work कर रहे हैं तो sagging is positive. So you have to check whether the force is trying to bend the beam in upward or downward. Upward bend हो रहा है, left hand side है positive. Right to downward bend हो रहा है, right hand side है positive. And this, so this is a sign convention you should follow, or else clockwise, anti-clockwise, whether whichever is suitable to you, you can adopt to that. Okay, and that sign convention will be utilized. Now see here, how will I calculate the bending moment at section 33 for this particular case? So अगर if I work on section 33 here, section 33 मेरा point D पे, right? Section 33 मेरा कहाँ पे है? तो section 33 मेरा point D पे है, right? Now अगर point D पे section 33 है, so how will I draw? I will need to check section इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने फोर्सेस है और राइट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव देयर आर टू फोर्सेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये एक फोर्स था और दूसरा वाला. तो पहला ए वाला फोर्स का देखते हैं, इक्वेशन क्या आएगा उसका. अभी वो अपवर्ड बेंड कर रहा है बीम को तो पॉजिटिव आएगा. सो आई विल राइट डाउन 15 इनटू उसका डिस्टेंस कितना, यहाँ से ए से इधर तक उसका डिस्टेंस ए से यहाँ तक है 4. आई एम टेकिंग अब सेक्शन मुझे डिस्टेंस दे रहा है 4 है, बट दूसरा जो 10 किलो न्यूटन है वो डाउनवर्ड है, वो बीम को डाउनवर्ड पुश करेगा. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे वो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा. इट विल ट्राई टू बेंड इन द एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच इज नेगेटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग माइनस into 2, 10 into 2. So if I solve this, it would be 15 into 460 minus 20, and it will give me the answer as 40 kilo Newton meter, and that is my bending moment at D. But if I work same thing on the right hand side, अगर मैं right hand side से solve करता तो देखो right hand side पे ये वाला 10 किलो न्यूटन था, तो वो वाले 10 किलो न्यूटन के लिए क्या आएगा, वो वाले 10 किलो न्यूटन के लिए it is downward that side. So downward है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव ना, डाउनवर्ड वो साइड पे नेगेटिव, सॉरी, इट इज ट्राइंग टू बेंड द बीम हॉगिंग वे में वो नेगेटिव हो जाता है. हॉगिंग वे में अगर वो नेगेटिव है तो व्हाट आई विल डू, आई एम राइटिंग फॉर दिस 10 किलो न्यूटन है, ये वाला जो 10 किलो न्यूटन है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये वाले 10 किलो न्यूटन के लिए. तो वो वाले 10 जीरो हो जाएगा उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी. हाँ, वेरी गुड. सो वो उसका डिस्टेंस ही नहीं है बिकॉज वो जीरो है. तो पहले उसका जीरो लिख देता हूँ, जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा, आगे फर्स्ट केस के लिए मैंने लिखा है. उसके बाद जो नेक्स्ट वाला 10 किलो न्यूटन है इधर, दिस इज 10 किलो न्यूटन, तो वो 10 किलो न्यूटन के लिए कैसे आएगा, इट विल बी अगेन माइनस 10 into 2 and plus 15 into 4. So again you are going to get the same 40 kilonewton as your answer. So whether you take on the left hand side, right hand side, your bending moment or shear force values are not going to change according to that sign convention you have. But most, for having the very much simplicity, what we are going to do is we will always try to work on the left hand side.
so that मुझे multiple sign convention याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती unless and until it is required. So therefore we will be working only on the left hand sides of the sections, so have to have the simplicity and to have to stick to the simple single sign convention in the entire span of the beam. Okay, so therefore most probably we'll be using left hand side, and if it is required, sometimes it may happen that if you are coming on the left working on the left hand side, you may have to deal with multiple forces, but on the right hand side there is one or two forces. So writing equation for moment for multiple forces, 4 to 5 forces, is difficult rather than writing for only 2 forces on the right hand side. So that time sign convention will help you. Right hand side में दो ही forces के लिए लिखो, proper sign convention you can take and you will get the same answer instead of writing 4 to 5 forces का equation, because equation you will write, then you will put in the calci and calculate, so that will get take some extra time, a bit of extra time. Okay, but it is of your choice how you can do it. So have you understood what do you mean by shear force, what do you mean by bending moment, how we calculate? Okay, so now let us go to the next simplest problem, which is a simply supported beam. Okay, so I'm moving to the I am writing what is BMD here. What is BMD then? What we understood? So BMD, bending moment diagram, is nothing but variation of bending moment across the span of the beam. Of the beam. Okay, understood this. So now let's go to the next one. Yeah. So draw CFD, SFD and BMD diagram for the beam shown in figure. Whatever the beam is shown in figure, you have to draw the SFD and BMD. Now this is a simply supported beam which is supported at 2 points, at point A and at point B. So now as you can see, there is only a point load acting at central point C. हमने वो center point पे C पे ये रखा है, तो ये distance कितना होगा? Of course this will be L/2 and this will be L/2. So you know that कि vertical reaction A पे कितना आएगा? Of course half of आएगा, so this would be W/2, and this reaction will also be VB equal to W/2. Okay, now I'm writing the simple reactions. Now how to draw the shear force and bending moment diagrams. ये diagrams हम कैसे draw करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. तो diagram draw करने के लिए what we require is, we'll require जहाँ पे भी तुम्हारा ये loading, this is called a loading diagram जो हमने पहले बना के रखा है, उसके नीचे ही हम लोग shear force variation दिखाएंगे और उसी के नीचे हम लोग bending moment variation दिखाएंगे, right? हाँ, उसी के नीचे हम लोग bending moment variation लिख सकते हैं. That is why I am taking some reference lines. कैसे reference है? So let us I want to have this one कि यहाँ से मैं चालू करूंगा simple. Okay, let's say here I will draw the SFD diagram and here I will draw the bending moment variation. Only x-axis I have drawn, vertical axis पे हमें draw करना है. So now let us calculate. First of all, we should have some values, then only we will be able to plot them on the graph. So how to plot and how to do it? तो उसके लिए क्या करना होता है? तो let us understand the shear force calculation. Let us understand shear force calculation. Okay. Now to understand shear force calculation, always remember, अभी हमने यहाँ पे देखा shear force क्या है. तो shear force है vertical forces. तो vertical forces होने की वजह से the very most important thing we need to understand is the shear force का value at the graph, whatever we are trying to draw, is going to vary due to the applied vertical force. तो जो भी shear force का value है, it is going to vary due to the applied vertical force. And वो जो applied vertical force है, वो किसके ऊपर change हो रहा है? जो तुम्हारा diagram में vertical loads है, because of that it is going to change, right? Because of that it is going to change. So what do you say? Just a minute. Okay, so now let us understand what is shear force calculation and how it is going to work. Okay, so shear force calculation may, the very first thing is where at which points you are going to calculate the shear force. So always remember, in shear force calculation we calculate the shear force
at some important points, because ये पूरा graph बनाने के time पे also whenever we try to draw a graph, we select some discrete points. On the discrete points we'll be able to plot the values of shear force, and then we'll continue a continuous curve or continuous variation we can plot. So that is why it is important to know at what points we need to consider. So always remember, whenever we draw for shear force diagram or bending moment for any point, so whatever the points which are important. Now what are important points? Wherever the loading changes. For example, the supports pay, there will be a vertical reaction. So we will be always plotting the shear force at supports. Then at the span, in the span of the beam, wherever the loads are acting, point load is acting, you have to calculate the shear force variation at that point. Then if there is a UDL, you have to calculate the shear force variation. And if there is a BMD, bending moment acting or moment acting, couple acting, you have to take that as point as important point. Okay, so matlab between A and B, I will not take n number of points. So you're mute. सर माइक ऑफ है. Okay, fine. So shear force and shear force at 1 and at point 2. So see here why I have written this way. Why I have written this way. So as you can see, at point A, B and C, there is a vertical point load acting. तो जब भी कोई पॉइंट पे वर्टिकल पॉइंट लोड एक्ट होता है तो वहां पे शेयर फोर्स का वैल्यू इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली मतलब उतना शेयर फोर्स सडनली एक्ट होगा वहां पे एज कंपेयर टू द सेक्शंस इन बिटवीन A to C. Therefore we are not bothered about A to C, we will only bother about those points where the shear force is going to change drastically. तो drastically कहाँ पे change होता है? जहाँ पे point load act करता है या फिर जहाँ पे UDL है. तो अभी तो point load है, so let us, that is why I have taken only calculation at points A, C and D. लेकिन अगर A, C और B points पे जब मैं calculation देख रहा हूँ तो you must have observed something. I have written something called as shear force 1, shear force 2 and all those things. What are these shear force 1 and 2? So here you need to understand कि if I try to take the section at point 1, point A, तो point A पे shear force का दो values आने वाले हैं. मतलब shear force will start at some value and because of the load acting at A, it will increase or decrease at certain value. मतलब जहाँ जहाँ पे point load act करता है उधर मेरे पास दो shear force का values आता है. One is the initial value and another is the final value. Initial value is the effect of earlier loading and the final value is addition of the effect of the load which is right now acting at point A. तो उसके लिए ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? We take two imaginary sections. We take two imaginary sections at point A. Now how will I take two imaginary sections? I will take a section like this and I will take a section like this. This particular section I'll call left hand side section and this section I'll call right hand side section, or else I'll call this as section 1 and this is section 2. Now ये particular section जब मैं 1 लेता हूँ so section 1 if I am taking, and if I take the left side of the section 1, if I take the left side of the section 1, for example here this side, there is no load. Okay, but if I take left side of section 2, अगर मैं इसके लिए यहाँ पे देख रहा हूँ तो there is a vertical load VA. Are you understanding it? दो सेक्शन मैंने ऐसे लिया, एक वर्टिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे, एक वर्टिकल रिएक्शन के राइट साइड पे. लेफ्ट साइड का जो रिएक्शन है वो वर्टिकल लोड को कंसीडर नहीं कर रहा है,
राइट साइड का जो है वो वर्टिकल लोड को कंसीडर कर रहा है, तो इसका इससे हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेंगे, एक वो लोड को कंसीडर करके, एक वो लोड को कंसीडर नहीं करके। तो पहला वाला जो वैल्यू है वो मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर फोर्स मैंने सेक्शन 1 पे लिया, आई विल बी डीलिंग विद दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड वो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं देखता हूँ, तो अगर ये वाला सेक्शन मैंने देखा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी लोड नहीं है, तो देयरफॉर शेयर फोर्स का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज बी 0 बिकॉज कोई भी डायग्राम स्टार्ट्स विद 0, so therefore this is a 0 value. Then if I go for section 2, तो मेरा section 2 ये वाला है, just on the right side of the my reaction. तो उसके लिए कौन सा लोड है, लेफ्ट साइड पे, अरे अंडरस्टैंडिंग, लेफ्ट साइड मतलब मेरा वर्किंग का साइड, लेफ्ट राइट, इसके लिए मैं सेक्शंस को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज लेफ्ट साइड सेक्शन, आई एम कॉलिंग इट एज सेक्शन 1 सेक्शन 2 फॉर पॉइंट ए। सिमिलरली जहां पे मेरा लोड है वहां पे मैं दो सेक्शंस लूंगा, तो पॉइंट ए पे अगर मैं ऐसा सेक्शन लेता हूँ, ये सेक्शन 1 के लिए, तो देयर इज नो लोड ऑन दिस साइड, बट इफ आई टेक दिस, तो यहाँ पे एक लोड ऐड हो जाता है जो कि वर्टिकल लोड है VA, जो कि वर्टिकल लोड है। तो उसके लिए अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, तो उसके लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल लोड है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और वही मेरा साइन कन्वेंशन है, लेफ्ट साइड पे वही मेरा साइन कन्वेंशन है, वर्टिकल अपवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इज कि यहाँ पे दिस इज VA और द वैल्यू इज W/2, दैट इज माय shear force on the shear force at point A but on the second section. Okay, similarly now if I go for two sections at point C, if I take sections 1 and section 2 at point C, section 1 and section 2 लिया मैंने, section 1 की बात करूंगा तो लेफ्ट साइड पे क्या लोड है, लेफ्ट साइड पे ये अकेला लोड है W/2, जो अकेला लोड है तो मैं वो लिखता हूँ W/2 as it is. ओके, बट मैं अगर सेकंड सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाले सेक्शन की, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी है और ये भी ऐड होगा अभी, सो देयरफॉर उसके लिए क्या आ जाएगा मेरा आंसर, उसके लिए मेरा आंसर आ जाएगा W/2 जो ऑलरेडी था उसमें ये -W ऐड हो गया। Why -W? बिकॉज वो डाउनवर्ड था, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाता है, सो देयरफॉर आई विल टेक माइनस एंड आंसर विल बी -W/2. ओके डन. नाउ सिमिलरली आई विल गो फॉर पॉइंट सी. पॉइंट बी पे अगर मैंने दो सेक्शंस लिए ऐसे, वापस से सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 की बात करूंगा तो उसमें ये दोनों फोर्सेस आएंगे जिनका ऑलरेडी मैंने करके रखा है, W/2 एंड -W, जो इसका वैल्यू यही आने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है, सो आई विल राइट डायरेक्टली -W/2. ओके, बट इफ आई टेक द राइट दिस साइड सेक्शन, ये साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ तक कितना आया था W/2 -W/2, उसमें ये पॉजिटिव W/2 ऐड हो गया, तो वैसे भी 0 आने वाला है, और एल्स राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट सेक्शन है, इसके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो वैसे भी वो आंसर 0 आने वाला है, तो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट हमेशा 0 से ही होता है, so you can directly write down 0, or else this 0 would have been like this also, W/2 plus जो additional load है W/2, you are going to get the same answer, 0/2 0. Now we have got all these values, let us try to plot them on the shear force diagram and try to draw the diagram. तो वो diagram draw करने के लिए Hello sir. Sir, why you taking only left side? you want you take right hand side also, answer we are going to get the same way. Why I explained you why I am taking left hand side, that is my simplicity. I'll always remember only one convention. If you want I can anytime I can shift between left and right, but it is going to create a confusion while taking sign convention. This is very simple when we are having only multiple to 1 or 2 loads. If there is a span of beam having multiple loads, UDL, UVL at a time, and that is the kind of problem you will get in exam. So if you are very good at switching the sides and correcting the sign convention as per the left hand side and right hand side section, I'm absolutely fine. But why I'm suggesting you to take on the left hand side, to stick to a single sign convention and calculate. Otherwise we are going to make some mistakes. Even a single mistake of minus sign is going to give you a wrong diagram and 0 marks in this kind of problems. That is why I am asking you to keep on the same side. Sir, can you explain at point B again? I am going to. Let me complete. So I have ये points है. तो देखो मैं यहाँ से अभी जो values आया मेरे को, as per that I am trying to write down. So this is point A, this is point C, this is point B. तो point A पे मेरा क्या value है? Point A पे मेरा value है 0 and उसके बाद है W/2. Let us assume that कि ये value W/2 है. So I am assuming this is W/2. Point C पे क्या value है? तो पॉइंट सी पे पहले ये W/2 कांस्टेंट रह रहा है एंड देन वो ड्रॉप हो रहा है -W/2 पे, राइट, आई एम राइटिंग दिस एज -W/2. देन पॉइंट बी पे वो -W/2 वही सेम रह रहा है एंड देन अगेन इट इज कमिंग टू 0. सो हाउ विल आई जॉइन दिस?
तो I will join 0 to W/2 by a straight line on point A, ठीक है, and then यहाँ से मुझे यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये मिला पॉइंट सी पे. देखो अभी ये पॉइंट मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा. वाई स्ट्रेट लाइन? बिकॉज सेम लेवल पे वो, ये भी W/2 वैल्यू है, ये भी W/2 है वैल्यू. सो आई एम ज्वाइनिंग बाय स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है देयर इज नो एडिशनल लोड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. इसके लिए उनके बीच का शेयर फोर्स डायग्राम प्लेनर आया है. प्लेनर मतलब नो मच वेरिएशन. वॉट एवर द शेयर फोर्स वाज एक्टिंग एट पॉइंट ए, द एक्सट्रीम शेयर फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग W/2, इट इज मेंटेनिंग सेम अप टू पॉइंट सी, जहां पे वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ एडिशनल लोड एट पॉइंट सी, एंड दैट कॉज्ड इट टू गो डाउन अप टू माइनस W/2. अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये जो शेयर फोर्स में वर्टिकल लाइंस आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज वर्टिकल लोड एट लोडिंग डायग्राम, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा वो बता रहा है कि देयर इज नो एडिशनल लोड इन बिटवीन ए एंड सी. तो यू कैन सी यहाँ पे ये रीजन में कोई भी एडिशनल लोड नहीं था, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आया. बट जैसे ही सी पे पहुंचा, सी पे ड्रॉप डाउन हुआ. व्हाई ड्रॉप डाउन? बिकॉज देयर वाज अ डाउनवर्ड लोड. Why there is upward increase in the shear force value? Because there was upward load. Are you understanding it? This is how it represents. And then यहाँ से यहाँ पे वो वापस से constant जाएगा because there is no load between B and C, but there is a load at W/2, तो वो उसको वापस से zero पे लेके गया. So this is my variation of shear force across the beam, and this is called as the shear force diagram. Understanding it? कैसे मैंने plot किया? Once again I will tell you how to calculate. Calculate करने के लिए क्या किया? मैंने points identify किए. Points identify करने के बाद whenever there is a vertical load at a given point, you have to take two sections, left side section, right hand side section. On left hand side section, okay, you have to take two sections, left and right. पहला section जो तुम consider करोगे उसके left side पे क्या क्या forces है, you add them, then you take the other section. उसके लिए क्या हो जाएगा additional thing? जो तुमने पहले कैलकुलेट किया था वो तो सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो सेम ही आता है, उसमें ये एडिशनल लोड ऐड हो जाता है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था. सी हियर व्हेन आई एम ट्राइंग टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो उसमें मैंने इधर का जो भी किया था माइनस W/2 वो मैंने सेम रखा, माइनस W/2. उसमें खाली अभी इधर कुछ भी ऐड नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ट्राइंग टू राइट फॉर दिस वन, इसका आंसर कैसे आएगा? ये सेक्शन के लिए, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड पे दो फोर्सेस है, एक तो ये W/2 वाला फोर्स और ये माइनस W वाला फोर्स. बट जब मैं राइट साइड के सेक्शन पे बात कर रहा हूँ तो उसमें ये दोनों के साथ ये वाला भी ऐड हो गया जो वर्टिकल अपवर्ड था. अरे अंडरस्टैंडिंग इट? दो सेक्शन लेने का काम क्या है? यस सानिया. सर वो पॉइंट सी में SF2 आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, और W/2 माइनस W कैसे आया? यस, नहीं so when समझा. I'm writing for point C के लिए मैंने दो सेक्शंस लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2. सेक्शन 1 की जब बात किया तो सेक्शन 1 के लेफ्ट साइड पे क्या क्या फोर्सेस थे? इसके लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है? टेल मी. देयर इज ओनली वन फोर्स, W/2. So that is what I have written, right? हाँ. Sorry, yeah, this one I have written. Okay. हाँ. Now what is on the right hand? मैंने जो सेकंड सेक्शन लिया तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड पे क्या क्या फोर्सेस है? सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये W है. ये W/2 ऑलरेडी था और ये अभी हाँ. ऐड हो गया. ओके ओके. मैंने क्या लिखा? W/2 ऑलरेडी था, माइनस W ऐड हो गया, so it gave me the value of minus W/2. Yes, somewhere अक्षता was there. हाँ, yes अक्षता. सर जो साइन कन्वेंशन है ना लेफ्ट एंड राइट का आपने इधर बताया, Yes. लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव है एंड राइट Yes. में डाउनवर्ड्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Downward positive. But we are not working on right hand side. If you have seen, I am making Yeah. you to work on left hand side. तो एक ही साइन करके याद रखेंगे. सर ऑल्सो Hi, ये जो Akshata. SFD है Yes, मतलब इज इट अ ग्राफ ऑफ सम काइंड? it's a graph only ना. ओके. ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग? एक्स हाँ. एक्सिस पे कुछ वैल्यूज लेते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस एंड उसको पॉइंट करके फिर जॉइन करते हैं. तो दिस इज व्हाट द सेम थिंग वी आर डूइंग इट, जस्ट वी आर कॉलिंग इट एज अ डायग्राम, right? If in dynamics whenever the variation of displacement versus time was given, we used to call it as ST diagram, displacement time diagram, velocity time diagram. So it's a graph only. Okay, understanding this? Yes, sir. Yes, Saurabh Gupta. So can you explain the diagram one part again? How we plotted the diagram? Yeah, how I had started with the diagram, you must have understood now. By now you must have understood. By now you must have understood the calculation part, right? ये Yes, sir. calculation जो मैंने किया वो समझ में आया. तो अगर calculation समझ में आ चुका है, then how I can do the other things is
कि सबसे पहला वैल्यू क्या मिला मुझे पॉइंट ए पे, द फर्स्ट वैल्यू विच आई एम गेटिंग इज 0, तो आई हैव स्टार्टेड विद 0. देन पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, दूसरा वैल्यू है प्लस w/2, सो आई वेंट अप टू प्लस w/2. ठीक है, देन ये दोनों वैल्यूज प्लॉट हो गया, तो आई विल गो टू सी. सी पे पहला वैल्यू क्या है w/2, W/2 प्लॉटेड w/2. ठीक है, देन सेकंड वैल्यू क्या था माइनस w/2, minus W/2. केम डाउन माइनस w/2. देन पॉइंट बी पे सबसे पहला वैल्यू था माइनस w/2 एंड देन लास्ट वैल्यू वाज 0. ठीक है, देन आई जॉइंड इट कि 0 से w/2 वर्टिकल अपवर्ड लाइन क्यों आया, तो इसका मीनिंग समझो. व्हाई वर्टिकल अपवर्ड लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स कि देयर इज अ वर्टिकल अपवर्ड लोड एट पॉइंट ए एंड व्हिच इज देयर, यहां पे है ना ये लोड, so this causes this vertical rise. Okay, why, what causes this horizontal constant thing, because there is no load, additional load between A and C. Understood? Yes, sir. There is no additional load, that is why this will remain horizontal. Then but at C there is a vertical downward load which causes it to drop up to minus w/2. Again there is no load, nothing load between B and C and B, so that's why it kept as it is from minus w/2 minus w. Okay, this is also minus w/2. And then as there was vertical load at B which caused it to go up to point B. Understood? Yes, sir. Now let us go for bending moment to plot at ABC how the bending moment is going to vary. Okay, so yeah, so bending moment calculation, bending moment calculation. So bending moment calculation में, now see here, shear force में value drastically changes wherever the point loads are acting. Okay, shear force में the values drastically change wherever the point loads are acting, right? And in bending moment, the bending moment value will drastically change if and only if the moment is acting at a point. Once again remember, shear force में the value drastically changes मतलब दो वैल्यूज आएगा वहां पे, एक इनिशियल एक फाइनल, जो कि हमने अभी देखा जहां जहां पे पॉइंट लोड था वहां पे दो वैल्यूज आया, राइट? अगर मैंने ये सेक्शन पे देखा, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बीम, डू यू हैव टू वैल्यूज ऑफ shear force here? No, I have No. single value. This is the value, my w/2. But where I have two values, only at the section where I am having a point load. Here there are two values of shear force. One is minimum, other is maximum. This is only due to the additional point load at that point. Always remember, shear force will give you drastic variation wherever there is a point load, and bending moment diagram will give you drastic variation wherever there is a moment or a couple acting on the beam. Is there any couple acting on ABC? No, sir. No, sir. so there is no couple. That means there won't be any drastic variation at any point on the cross section of the beam. Moment बाद दो values कहीं पे भी नहीं आएगा, single values आएगा. Now for that I will require only one section to be taken at every point. मतलब point A, point B और point C पे जो मैंने दो sections लिए थे shear force में, ये सब imaginary है. Later in the part we are not going to draw these also sections also. हम लोग imagine करेंगे और directly values लिखेंगे. You will be able to do it. Don't believe me. ठीक है, अभी हम लोग वो दो सेक्शन बना रहे हैं इसके लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन सा मैं एक वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ. ओके, रेस्ट लेटर ऑन यू विल बी एक्सपर्ट इनफ टू राइट डाउन विदाउट सेक्शंस. Just looking at the problem, you can be able to calculate orally how the diagram can be. Only for the values you have to calculate. Otherwise, the shape of the diagram you will be able to guess it just looking at the beam. That is the kind of expertise we will be doing it at the end of the chapter. Okay, so that is not an issue. So for that, अभी जहाँ पे मुझे ये मिल रहा है, unless and until sorry, okay, unless and until I have the bending moment given at the point ABC, मुझे दो सेक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी when I am calculating bending moment. So अगर दो सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं सिंपली फाइंड कर सकता हूँ. Let's say at point A I will take only one section bending moment जो कि A से ही पास करेगा, राइट ना? बिकॉज ये दोनों सेक्शन का एक्चुअल मीनिंग कुछ नहीं था. एक्चुअल मीनिंग ये था कि एक बार वो लोड को लो, एक बार मत लो, बाकी वो सेक्शन ए पे ही है. तो सेक्शन ए पे अगर मैंने वैसे ही लोड यहाँ पे लिया तो टेल मी व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट वहां पे वही सेक्शन पे, अगर ये सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया ऐसा, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे देयर इज नो लोड, कोई लोड ही नहीं है, तो उसका मोमेंट क्या लेंगे हम लोग ए पे. अगर राइट साइड पे देखते हो तो दो लोड है, पर उनका भी तुम मोमेंट लोगे तो भी आंसर 0 आने वाला है.
you will take w into l by 2 and w by 2 into l, you're going to get the zero answer. But as I told you कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करना है, तो अगर मैंने सेक्शन यहाँ पे लिया, अब ये दोनों में से ये जो 1 2 है उसमें से कोई भी एक सेक्शन लो, that doesn't make any difference here, because मोमेंट के लिए हमें अगर वो फोर्स लिया भी तो भी उसका मोमेंट जीरो आने वाला है, बट शेयर फोर्स में वो फोर्स लेने के बाद उसका वैल्यू चेंज होता है, बट दैट इज नॉट अ केस विद मोमेंट. मोमेंट में अगर मैंने वीए का मोमेंट लेना ट्राई भी किया एट पॉइंट ए, तो जीरो आने वाला है, तो उससे मुझे ये दोनों सेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उनका वैल्यू एक ही आता है. So therefore, if I take this section and if I work on the left hand side, there is no load on the left hand side. So if there is no load on the left hand side, my answer will be simply zero. So bending moment at A is going to be zero. Now at point B, if I at point C, if I am working, तो C पे भी मैं क्या करूंगा, एक ही सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन लो, ये वाला सेक्शन लिया, उसके लेफ्ट में क्या क्या है, उसके लेफ्ट में एक ही फोर्स है ये. अगर मैंने ये वाला सेक्शन लिया तो ये फोर्स पे आता है, बट इसका मोमेंट तो जीरो आने वाला है C पे इसका मोमेंट जीरो आएगा, बिकॉज आई एम वर्किंग एट बेंडिंग मोमेंट एट सी इसका डिस्टेंस ही नहीं है C से, तो मोमेंट जीरो. तो एक ही फोर्स बचा है जिसका मोमेंट आ सकता है, जो कि ये फोर्स है. और ये मोमेंट कैसे दिखा रहा है, ये बीम को अपवर्ड बेंड कर रहा है या क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है. तो क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है तो ये पॉजिटिव मोमेंट देगा. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, and that will be W by 2 is the load into distance. कितना है ये लोड का C से, L by 2 ना, L by 2. write down L by 2, तो आंसर क्या आएगा, W L by 4. हो गया ये. देन एट पॉइंट C, सॉरी एट पॉइंट B. नाउ सी, पॉइंट B के लिए मैं अगर कोई भी सेक्शन लेता हूं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दो है. कौन से दो है, तो ये W by 2 है और ये W वाला है. ये W by 2 का मोमेंट कितना आएगा, तो वो लिखता हूं पहले. वो W by 2 का मोमेंट आएगा W by 2 इंटू डिस्टेंस इज L, पूरा L ना, B से डिस्टेंस कितना है इसका, पूरा L डिस्टेंस है, राइट, पूरा L डिस्टेंस है. हाँ, एंड ये इसका ये मोमेंट का इसका मोमेंट कितना आएगा, दैट इज डाउनवर्ड है, तो आई नीड टू टेक इट नेगेटिव, माइनस W इंटू डिस्टेंस इज L by 2. यू सॉल्व दिस, कितना आएगा देखो, जीरो ना. तो वही मीनिंग है, अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो उसके राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट सेक्शन लेके सेक्शन का राइट साइड देखा होता तो क्या होता, जीरो होता. तो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट राइट तुम कर सकते हो, बीच में तुम खाली लेफ्ट में सॉल्व करो, एंड जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचते हो तो राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं रहता, तो आंसर जीरो ही आने वाला है. दैट आई प्रूव्ड यू आल्सो. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके दो फोर्सेस का मोमेंट फाइंड करता तो भी आंसर जीरो आएगा, या फिर राइट हैंड साइड पे बोल के मैं सिंपली जीरो लिख सकता हूँ. इट इज अप टू योर चॉइस हाउ यू डू राइट डाउन. सर अगर कपल रहेगा एंड में तो फिर जीरो नहीं आएगा ना, कपल रहेगा तो जीरो नहीं आएगा, कपल रहेगा तो वी हैव टू टेक टू सेक्शंस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब भी मेरे कोई एक पॉइंट पे अगर मोमेंट आया, कपल आया, तो बेंडिंग मोमेंट आई कैन नॉट कैलकुलेट बाय सिंगल सेक्शन, आई हैव टू टेक टू सेक्शंस. One section ignoring the couple and other section considering the couple. It will give me two drastic variation there. Understood? जैसे मैंने shear force के लिए किया था. Okay sir. Okay, understood this? Now can I plot these values here? So at point A the value is 0, at point C the value is 0, but at point B have some value. क्या value है उसका? उसका value है let's say WL by 4. ठीक है? So how the variation will be? So from 0 to this there will be continuous variation. Always remember SFD and BMD, SFD में जो भी वेरिएशन होता है उसका 1 degree higher variation will be there in the BMD. Why? Because SFD is only summation of forces and BMD is summation of force into distance, right? तो यहाँ पे क्या हो गया? For example, I can write down SF. Shear force is function of the forces only, but bending moment is force multiplied by distance, right ना? तो यहाँ पे x raised to 0 है मतलब, so this is a x raised to 0 है, और यहाँ पे क्या x raised to 1 आ गया. अगर यहाँ पे x raised to 1 होता और यहाँ पे और एक डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई करता तो इट वुड बी 2. मतलब हमेशा बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन आने वाला है वो 1 डिग्री हायर होने वाला है. तो फॉर एग्जांपल मेरा शेयर फोर्स में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो उसका 1 डिग्री हायर मतलब इंक्लाइंड लाइन. अगर मेरा शेयर फोर्स में इंक्लाइंड लाइन आता है तो मुझे 1 डिग्री हायर मतलब पैराबोलिक इक्वेशन. एंड अंडरस्टैंडिंग इट, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हैज x raised to 0 वैल्यू, मतलब मैथमेटिकली वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट लाइन. एंड उसका डेरिवेटिव अगर हम लोग उसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ वैल्यू कुछ कांस्टेंट ये आता है, फंक्शन आएगा. फॉर एग्जांपल आई हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके, एंड इफ आई इंटीग्रेट इट, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन का ही है. बेंडिंग मोमेंट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ शियर फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ शियर फोर्स विद डिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू दिस वे. देखो शियर फोर्स मतलब मेरा फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट मतलब फोर्स इनटू dx है. ठीक है, इफ आई इंटीग्रेट इट ओवर द स्पैन फ्रॉम point A to point B, I am going to get the bending moment. So therefore इसका mathematical meaning क्या हो जाता है
कि जो वेरिएशन तुम्हारा shear force में है उसका 1 डिग्री हायर वेरिएशन आएगा बेंडिंग मोमेंट में। तो अगर मेरा shear force में स्ट्रेट लाइन है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट में, आई एम राइटिंग SFD BMD हियर, shear force में स्ट्रेट लाइन है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट में क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा। इंक्लाइन या डिक्लाइन आएगा, वील हैव टू डिसाइड, बट वो वेरिएशन आएगा। ठीक है, अगर मेरा SFD में इंक्लाइन लाइन है तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व। अगर यहाँ पे पैराबोलिक कर्व है तो इधर क्यूबिकल कर्व आएगा। वी आर गोइंग टू डू दिस क्लियरली। मतलब हमें कर्व का एक्चुअल मेजरमेंट से ड्रॉ नहीं करना है, बट जस्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कर्व, whether it is parabolic or cubical. Sir, just actually due to network connection, can you please explain the at point B wala part of bending moment? Actually, I didn't get it. I am going to repeat it once again, don't worry. And अगर नहीं भी हुआ तो you are going to get the video of that. Don't worry. Okay, wait. So what I was trying to tell about कि तो अभी यहाँ पे मेरा स्ट्रेट लाइन है तो 1 डिग्री हायर मतलब क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन लाइन। इधर भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन, बट मुझे 2 पॉइंट्स पता है एंड पॉइंट्स, तो इट विल बी अ डिक्रीजिंग लाइन। अंडरस्टैंडिंग इट? सो हाउ माय BMD वेरिएशन इज देयर, it is BMD is increasing at the rate from point A to point B, it is maximum at this and then it decreases. Now ये diagram ये तो हमने बना दिया। Once again I will tell you how to calculate bending moment. तो bending moment मैंने कैसे calculate किया, तो bending moment मैंने सबसे पहले सर आपने B और C पॉइंट को स्विच किया क्या ग्राफ में, एक बार देखो। नहीं तो B C आपका देखो इस पे पॉइंट ग्राफ में लिखते हो क्या, हाँ वही, हाँ शिफ्ट किया है, that is okay, बाकी कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके सर, अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ए पे क्यू 0 आया, बिकॉज ए पे सेक्शन लेता हूँ लेफ्ट में कुछ नहीं है, बी पे क्यू 0 आया, बी पे सेक्शन लेता हूँ राइट पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली एंड एंड स्टार्ट पॉइंट ऑलवेज गोइंग टू बी 0 फॉर एनी ऑफ द केस। ओके, एंड सी पे कैसे फाइंड किया, सी पे सेक्शन लिया, उसका लेफ्ट साइड पे देखो एक ही फोर्स है या फिर राइट साइड पे देखो एक ही फोर्स है, और जो सी पे फोर्स है उसका कोई मोमेंट नहीं आएगा सी पे, राइट? तो देयरफॉर लेफ्ट साइड पर जो फोर्स था W/2 उसका इनटू डिस्टेंस L/2, W/2 into L/2 gives me L/4, WL/4, and that is the maximum value. Now the very important question क्या हो सकता है, कैन यू आस्क मी दैट क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इतना कर क्यों रहे हैं हम लोग, राइट और रॉन्ग? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया नहीं, क्यों करने का डायग्राम, why SFD, why BMD, why what is the importance of drawing SFD and BMD? Material test. Yes, Material strength test. material strength, of course material strength पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, the subject name is material strength of the material. Okay, so why to draw SFD, why to draw BMD? Can anybody answer me? Sir, because when we are using a material to support a particular weight at one end of the beam, we need to be sure that the material is capable of handling the same amount of the pressure, bending moment. वो तो बट ऑब्वियस है ना, अभी मैं घर पे कुर्सी बनाऊंगा तो कुर्सी पे बैठने वाला लोड के लिए बनाऊंगा ही ना, तो why to draw SFD, why to draw BMD, that is why I'm interested in. Yes, anybody? Those who are there in at least in FEA internship, they must be knowing it. No? So to understand which material to use to make the have I talked about any material right now? ये पूरे प्रॉब्लम में No. मैंने मटेरियल की बात नहीं की, so there is nothing about material. Material तो आता ही है, that is a one criteria in designing, that is a different thing. But how this SFD BMD is going to help for a design? Design मुझे क्या करेगा? magnitude and direction of forces on any section or point of application. One second, can you repeat? I didn't hear. Sir, I was saying that to get the direction and magnitude of the forces acting on a section. Okay, beat correct. Okay, so now see here, the Tushar is almost correct. See here, अगर by default मुझे ये particular beam बनाना होता, ठीक है, तो ये बीम के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोड किधर आ रहा है, सी पे है, सी पे लोड है, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. कितना लोड है, W, तो तुम बीम सिलेक्ट करते हैं ऐसा कि जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए था, लोड कैरिंग कैपेसिटी W होना चाहिए था, राइट? हाँ, बट अभी SFD बनाने के बाद क्या फायदा हुआ, तो देखो SFD में मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू कितना है,
W by 2. So can I take a material only to support up to W by 2? Yes, sir. Yes, it will not fail. Why to take for W? So shear force diagram enables us to know what is the maximum value of shear load or what is the maximum value of bending moment my material will be subjected to. And I will take only up to that value. Why to take for maximum loading? Unnecessarily I am using extra material, it will increase my cost. So shear force and bending moment diagrams will enable us to know how the variation is going to take place across the beam. And suppose if I find that कि at point C सबसे ज़्यादा load आ रहा है, shear force आ रहा है, ठीक है, and उसके वजह से bending moment बढ़ रहा है, तो what I can do? I can make a different variation. Instead of having a uniform cross section beam, मैं C पे जहाँ पे ज़्यादा bending moment और ज़्यादा load आ रहा है, उधर मैं thickness बढ़ा देता हूँ. Instead of having a uniform cross section beam, I will take a cross section minimum at the ends and maximum at the center. Can I do that? तुमने अभी जो रेलवे ओवरहेड रेलवे का या फिर जो हाईवे पे हम लोग ब्रिज बनाते हैं उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर देखा रहेगा, ऐसा रहता है, राइट ना? ऐसा रहता है कि नहीं? Why we have thickness more here rather than keeping it here? So there is no maximum shear force acting here. सबसे ज्यादा तो इधर ही आने वाला है, तो उधर ही मटेरियल ऐड करो. इतना मटेरियल बच गया ना, अगर मैं ऐसा यूज करता, इतना मटेरियल बचा कि नहीं, राइट? राइट or Yes, not? sir. So are the shear force diagram and bending moment diagram useful? Yes, sir. Of course. Yes, For sir. a designer, it is very, very important. The preliminary thing he will do is understanding the loading condition, and he will draw the SFD-BMD to know where the load is maximum and for which load, which maximum load I need to design. Getting it? So that is why drawing SFD-BMD is very, very important a point of design in civil designs as well as mechanical component design. Okay? Have you understood now why we are dealing with this particular chapter? Yes, sir. Yes, sir. Have I made myself clear? Very clear? Is there anyone Yes, sir. still has any doubt? Yeah. So now the same thing we need to repeat. I say type K numericals we need to solve in the chapter, and we need to go about with the similar way, line. Okay. So let's go to the next problem.